Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the computer basics chapter 1 for the class 6. So this is the computer fundamental topics. This is the common for each and every classes, but in the your syllabus there is a one chapter that is computer basic. So I will going to start. Before I want to say just previous topics means the computer basics part 1 we have already discussed about the how many types of the computer basics या computer fundamentals, या you can also say how many topics we have to cover in computer basics या computer fundamental. So introduction I have already completed. Now it's time to start your topics. So let's do. So today I will start what is computer, right? So computer, everybody know what is computer. Okay, so now let's start the first topic of the chapter 1 computer basics. What is computer fundamental? So now let's start. What is computer? Write down your topics. So computer is an electronic device which is used to calculate something or count something. आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर्स का बहुत से बुक्स में देखेंगे उसका एक फुल फॉर्म दिया जाता है, बट आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म उसके फीचर्स उसके अकॉर्डिंग के अनुरूप अलग अलग राइटर अलग अलग लोग अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं, बट एग्जैक्ट में कंप्यूटर का कोई डेफिनेशन नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है. सो बेसिकली कंप्यूटर है क्या? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट समथिंग. आप लोग देखे होंगे इसका मेन काम क्या होता है? कैलकुलेट समथिंग या काउंट समथिंग. क्लियर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which is used to calculate something. Calculate something means what? It can perform many tasks like your daily work, something you are doing, some project work, some writing your letter, something you are designing your photo in a paint, so etc. So this is the task of the computer, means it will calculate something. Fine. Now, in other words, the computer comes from the Latin word that is the compute, which means to count. क्लियर हो गया? कंप्यूटर का जो वर्ड बना है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है, दैट इज द वर्ड कंप्यूट. आप लोग हमेशा इस चीज़ को नोट करिएगा, कंप्यूटर वर्ड्स आखिर कहाँ से आया है. तो कंप्यूटर वर्ड्स कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, which means to count something. Fine. So you can write down this definition also. If anyone asks what is computer, you have to say there is no full form of the computer. If any mention, they have designed the feature of the computer, but exactly there is no full form. Main the words of the computer is to calculate something. Yeah, means count something. In other words, computer comes from the Latin word that is the compute, which means to count. Clear हुआ? Okay. Now, according to the workflow of the computer, we have designed one definition. You should know about this definition. So, computer is an electronic device that takes data या information. I will discuss what is data, what is information in the next classes, in the next video. But data means, overall definition, data means raw fact, raw data of the information. Clear? Through input devices
like keyboard, mouse, and give to the CPU. After processing the data from the CPU, CPU generate the output that is shown by the output unit like monitor. क्लियर हो गया? ये मेन डिफिनेशन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर आखिर है क्या. कंप्यूटर जो है, so computer is an electronic device that takes data and information through input devices like keyboard, mouse, etc. and give to the CPU. After processing the data, CPU generate the output that is shown by the output unit. This is the functional definition of the computer. Means computers में आप लोग देखे होंगे कि keyboards, mouse, monitor, CPU. These are the 4 things compulsory it have. So what is the work? We write something by the help of keyboard, mouse, that is the input device. After writing some information or data, we enter something data in computer. Means the basic function of input device is to feed the data to the CPU. After CPU, it performs some task by the instructions which you have given. The CPU generate the output after processing, right? And this output is shown by the output device like monitor. जब आप कुछ लिखते हो, टाइप करते हो, तो कीबोर्ड माउस से लिखते हैं या टाइप करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं. जैसे कुछ काम करते हैं उसके बाद हम कीबोर्ड से इंटर या कुछ डेटा फीड करते हैं तो वो सीपीयू के पास जाता है. सीपीयू उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है उस इंस्ट्रक्शंस को. प्रोसेस करने के बाद वो एक रिजल्ट जो जनरेट करता है, वो रिजल्ट होता है आउटपुट. अब वो आउटपुट जो होता है हमें कहाँ पे दिखता है? आउटपुट यूनिट, एग्जांपल मॉनिटर पे दिखता है. तो ओवरऑल फंक्शनल डिफिनेशन हो गया कंप्यूटर का. सो आई होप दिस इज द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द कंप्यूटर. व्हाट इज द कंप्यूटर. सो आज का वीडियो यहीं तक. वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से लाइक कर देना आप लोग और सब्सक्राइब भी कर लेना. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.